Hello viewers, the question is a 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. So the problem is based on this particular apparatus or the experiment in which there is a rod, there is a certain rod. It is moving in a circular manner. It is moving like this in a circular manner, and one of its end is here at the center of the circular path, and another end is touching a ring. So this is the ring, and this particular rod is moving like this. The length of the rod is given as 1 meter. The magnetic field is along this direction, which is along the axis of the axial line passing through the center. So it means that we can take the either the outgoing direction or the incoming direction, but it is along the axis. So B is equal to 0.5 Tesla, it is given, and the radian frequency is given as omega is equal to 400 radian per second. So in this particular case, there is an EMF developed between this particular point and this particular point. For example, let us call the center point as O and this point as A, which is in touch with this particular ring. So there is a generation of EMF. The reason is due to the redistribution of this electron from here to from this rod to the ring. So there is a generation of EMF. Now you have to remember this formula. E is equal to, the value of E is equal to BL square omega by 2. This is the formula to calculate the EMF developed across this particular rod. Now putting the respective values, B is equal to 0.5 Tesla, L, which is the length of the rod, is 1 meter, so 1 meter whole square. Omega, which is the radian per second frequency, is given as 400. This divided by 2. Now we solve this and we get this value as EMF value as 100 volts. So this is the answer. This is the EMF developed across this particular rod. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया कि 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड है, ये रोटेट हो रही है एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से 400 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी से, और इसका जो एक्सिस है वो नॉर्मल है. इस रॉड का एक्सिस जो है इससे नॉर्मल है, जो पास हो रहा है इसके सेंटर से, और यहाँ पे ये कहता है कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला का, ये इस एक्सिस के पैरेलल है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक्सियल लाइन लेते हैं तो उसके पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 0.5 टेस्ला गिवन है. हमें ईएमएफ निकालना है जो डेवलप होगा सेंटर, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे और साथ के साथ रिंग, इन दोनों के बीच में जो है ईएमएफ जितना डेवलप हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2. यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज हम पुट करेंगे. B की वैल्यू है 0.5 टेस्ला, L की वैल्यू है 1 मीटर और ओमेगा की वैल्यू है 200. ओमेगा की वैल्यू है 400 रेडियन पर सेकेंड. दिस डिवाइडेड बाय 2. 2 से जब हम कट करेंगे तो यह आता है 200. 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज 100. 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर इज 100. सो द EMF कम्स आउट टू बी 100 वोल्ट्स. EMF आ जाता है हमारा 100 वोल्ट. सो दिस इज द आंसर. होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.